Okay, so let's see the second question is about what are the nutrients that the girls and boys in India is lacking of. So you can see from the graph here. Okay, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे वो ये है कि क्या इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं, ऐसा न्यूट्रिशन में क्या है जो हमारे भारतीय बच्चे बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं उसकी. Like anemia. So girls, there are more girls having this problem, anemia, girls in India. So which means about one in every 4 Indian kids, girls is having this anemia problem. आप देखेंगे कि एनीमिया की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है कि हर 4 में से एक लड़की को ये एनीमिया की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है. Yeah, I can see anemia is more prevalent in among girls. Okay, they are like the girls are lacking of iron, folate, and mostly vitamin D, vitamin A. So girls mainly need to your girls are, if you're having kids, girls the girls children, then you need to make sure to give them iron, folic acid, especially folic acid the girls need, and also vitamin D, the calcium as well for the bone health. आप देखेंगे कि बच्चों में, लड़कियों में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी पाई जाती है वो होता है आयरन, फॉलिक, विटामिन डी. तो हमें अपने खाद्य पदार्थ में ऐसे कुछ सामग्रियों को मिलाना होगा जिससे हमारी लड़कियों को आयरन, फॉलिक और विटामिन डी की मात्रा अधिक से अधिक मिले. For the boys, then the boys more prone to have this problem, which is vitamin B12 is lacking of vitamin B12 and also zinc. Okay, so boy, the vitamin that lacking of is this B12 and zinc. It's very common as well. अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में विटामिन B12 और जिंक की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है. तो आने वाले दिनों में हम लोग, आने वाले समय में हम ये भी जानेंगे कि अपने लड़कों की डाइट में कैसे विटामिन B12 और जिंक को हम लोग ऐड कर सकते हैं. Yeah, okay. So now third question is about, okay, I will quickly run through this one. Okay, I will show you the one. It's about how are all those kids, whether they have a high cholesterol or hypertension, high blood pressure, risk. So you can see from the graph here, a lot of girls and boys, okay, girls and boys, 1 in every 4 girls and boys, they are having this problem, which is not enough of good oil, good cholesterol, not enough in their body. Low HDL, not enough of good cholesterol in their body. आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के शरीर में अगर जब तक हम लोग अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तेल की वजह से उनके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं जा रहा. And then high triglyceride means they are taking too much of junk food. So that's why girls are taking more junk food than boys, it seems like. Okay, so girls. आप देखेंगे इस ग्राफ में लड़कियों के अंदर में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा भी सबसे ज्यादा पाई जा रही है. या इसका मतलब ये है कि हमारे जो घर की बच्चियां हैं वो जंक फूड की तरफ में ज्यादा आकर्षित हो रही. Okay, so now from this statistics, I'm just showing you that all this is very important to understand this, to know roughly about the nutrient which your kids are lacking of. Then only you know what are the supplements your kids will need. So that will be very important for us to look at this first. यहाँ पे इतनी ज्यादा जानकारी देने का मकसद यही है कि हमें ये पता चल सके कि हमारे बच्चों में जो मोटापा बोलिए या पतला होना बोलिए या उनके शरीर में उनकी हाइट का कम हो जाना, उसके लिए किन किन चीजों का न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारे बच्चों में ये सारी समस्याएं हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानते हैं. Okay, now here another graph, it shows that what are the food that your kids take most. Okay, you can see here which in green color, which means cereal. Okay, cereals, green color, which means they are taking the most in their every day. They are taking the most cereal like what I see just now, like paratha, idli, dosa. All these consider cereals, whole grains. Okay, wheat.
इस So पहले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो पहले ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इसका मतलब हमारे घर के बच्चे सेरल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, इडली, डोसा, पराठा, इस तरह की चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। yeah, they are taking so a lot. They are taking enough lah. In fact, idli, dosa, all these they are taking enough. What they are not enough, what they are might be lacking of is, you can see from the graph here, which red color, which means they are not taking enough, or taking too little. 10 and 11, which mean fish, chicken, eggs. Okay, so these are the food, and beans, green leafy vegetables, they are not taking enough. So all these in green, in red color, all these show in red color is are the food that your kids are not taking enough, which impacting their health. आप देखेंगे कि यहाँ पे जिन लाल रंग में जिन चीजों को दिखाया गया है कि उनकी मात्रा हमारे बच्चे ज्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे अगर वेजिटेरियन है, अगर आप शाकाहारी हैं तो सब हरी साग सब्जियों की कमी है, और अगर हम लोग मांसाहारी हैं तो हमारे शरीर के अंदर में अंडा, मांस, मछली जो है, ये सब की मात्रा हमारे बच्चे ज्यादा तौर पे नहीं ले रहे। Yeah, you can see bean, vegetable, all the protein food, beans, eggs, fish, chicken, all these proteins. So your children, from this diagram, then I understand that children in India particularly need to improve their protein intake. They have to make sure they have to supplement the kids with some protein, because their diet are lacking of that. आप यहाँ पे देखेंगे कि इन सारी चीजों से, हरी साग सब्जियों से, अंडा, मांस, मछलियों से हमारे बच्चों के शरीर के अंदर में प्रोटीन जाना चाहिए था, और वो प्रोटीन उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमी हो गई है आज हमारे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की। Yeah, this is the study which is done among 30,000 of kids in India. So I believe this result is quite reliable. So that's why before I start sharing about the children nutrition for India, so I at least I understand further about what the kids in India need. So first thing first, protein. Now we know from this, we know the kids in India, they not lacking of idli, dosa, all this carbohydrate. They are enough of that. So what you need to do as parents, you need to introduce protein food sources. आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्टडी की गई है, ये 30,000 बच्चों पे, ध्यान रखिएगा 30,000 बच्चों पे इसकी रिसर्च की गई है, तो ये बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय रिपोर्ट है। तो इस पूरे रिपोर्ट में आप लोगों को जो बताया गया उससे हमें एक जानकारी मिली कि हमारे बच्चों के शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट तो बहुत प्रचुर मात्रा में जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ये सीखना है कि हमारे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई है। सो आज हम लोग उस प्रोटीन की कमी को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। Yeah, and then here another statistic show 2 out of 5 adolescents take milk in their daily diet. However, another 2 out of 5 adolescents did not consume milk even once during the past week, which means all the parents, you have to be honest. If your kids are not taking milk every day, your kids might be prone to have this stunting problem. Like they are shorter than others, they might be thinner than others, they might be weaker than others. So it's very important as well to make sure your kids are taking some dairy product. Okay. आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें से अगर बात करें तो 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे खाना खाते थे, रेगुलर इंटरवल पे खाना खाते थे, और कुछ उसी में से 5 में से 2 बच्चे ऐसे भी थे जो रेगुलर बेसिस पे खाना नहीं खाते थे, और नहीं खाने की वजह से उनके शरीर में वो आम बच्चों की तुलना में उनका विकास बहुत कम हुआ। Okay, and then here another studies also show 2 out of 5 adolescents did not consume any green leafy vegetable even once during the past week. 2 out of 5. So you yourself, you know whether your kids are taking vegetables or not. So if your kids are not taking vegetables, is also your role or your obligation to show them how to enjoy the vegetables, or you have to supplement them with some fiber intake. इस रिसर्च में एक चीज और पाई गई कि हर 5 में से 2 बच्चे हरी साग सब्जियों का सेवन नहीं करते थे। अगर ये वो हमारे बच्चे, घर के बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इस सब्जी को खाने के लिए प्रेरित करें और उसको बहुत ज्यादा उत्साहित करें। Okay,
So, well, now, all right, now, okay, finally, let's start with all the tips for the parents here. What to do if you want your child to like healthy food? तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग करें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए. Okay, so first thing first, you have to start making yourself a role model for your kids. तो सबसे पहले हमें उनके लिए एक रोल मॉडल बनना होगा. उन्हें हम अच्छा खाएंगे तो वो भी अच्छा खाना सीखेंगे. Yeah, you must teach your child to make healthy choices. You yourself have to make healthy choices in front of them. And then choose, I will let you know what are the food you can choose. But first, you be ready for yourself as a role model for your kids. Yeah, that is a very important thing. I want to remind all the parents here. सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे पेश करें. आप उन बच्चों के सामने एक अच्छी हेल्दी ब्रेकफास्ट को या अच्छे हेल्दी खाने को आप उसका चयन करें और उसके साथ साथ में आप उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी फूड को चयन करने में उनकी मदद करें. Yeah, you can't like you are taking junk food and but at the same time you ask your children to take vegetables, then it won't work. Your children won't listen. और ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम जंक फूड खाएं और हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड खाने के लिए बोले, तो ऐसा कभी भी आपके साथ में नहीं होने वाला. Yeah, you have to, you yourself as parent, you also have to take care of your body health. Then yeah, if, that's why it's very important for you to practice what you learn so that your children can follow. तो हमें एज ए गार्जियन उनका रोल मॉडल बन करके हमें उनके सामने अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करना होगा. जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे भी करना शुरू करेंगे. So make sure all the meal time, dinner, breakfast, lunch, dinner, there is no issue discussed on the table, only positive things. Okay, all those negative emotion is well, it's not allowed during meal time. So let's set this as your family rule. ओके, तो सबसे पहला रूल जो हम लोग बनाएंगे अपने घर में वो ये होगा कि जब भी हम लोग खाने के लिए हम लोग टेबल पे बैठेंगे तो अपने चाहे हम नाश्ता करें, चाहे हम दोपहर का खाना खाएं या रात का भोजन करें, उस समय हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने घर में बनाना है और उस समय हमें कोई भी नकारात्मक भावनाओं की बातें उनसे नहीं करनी है. Okay, so are you ready? Ready? तो क्या आप तैयार हैं? All right, ready to set a very good positive and this setting for your meal time. So now let's see what are the foods, what to feed your children to keep them healthy. ओके, चलिए जब हम सब तैयार हैं ना तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसी सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे जिससे उनको हम लोग बहुत ज्यादा हेल्दी बना पाएंगे. Okay, so first, there are five types of food group. You have to remember 5 types only that which can every meal time, if you make sure you include these 5 types of food group, then yeah, your children will be healthy, will be okay with that. So and that will make your children energetic, can focus better in their study, and all of can function properly and prevent disease. So I'm going to tell you the 5 food groups that your children need. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे बच्चों के खाने में हमें 5 फूड ग्रुप्स, यानी हम जब भी हम खाना खिलाएंगे तो उनके शरीर के अंदर में वो 5 ग्रुप से जो भोजन है वो उनके शरीर में जाना चाहिए, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, बहुत ज्यादा उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और दिन भर उनके अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करेगा. So the 5 food group is what you see here, as starting with whole grains, then protein, fruits, vegetables, and dairy. So these 5 must included in every meal. तो हम बच्चों को जब भी खाना खिलाएंगे उनके खाने में हमें ध्यान रखना होगा कि उनके खाने में ग्रेन्स यानी कि दाल, चावल, इस तरह के या गेहूं की कुछ भी सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनके खाने में प्रोटीन अवेलेबल है कि नहीं है, अगर उनके खाने में उस समय के खाने में फ्रूट्स है कि नहीं है, फल है कि नहीं है, और साथ साथ में सब्जियां उसमें है कि नहीं, उसके साथ साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी गाय और भैंस के दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट. Yeah, so I make an example like you are having breakfast like idli or dosa. Okay, so it's only you can feed the plate with 1/4 of the plate, which is not half the plate. Yeah,
If half the plate, then your children might be prone to be overweight for long term. So the portion is also very important. Make sure your idli, dosa, or whatever carbohydrate, whole grains, wheat is only can comprise the plate. The portion will be 1/4 of it. आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को इडली डोसा या जो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह अगर हम लोग चपाती पराठा ये सब कुछ भी खिलाते हैं तो गेहूं या उस तरह की बनी हुई कार्बोहाइड्रेट अगर हम खिलाते हैं तो पूरी प्लेट में से हम उसको पूरे न्यूट्रिशन में से हम 1/4 हिस्सा ही सिर्फ उन्हें दे पाते हैं, जिसको आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा जाने से मोटापे का शिकार होंगे. And then half of the plate must be fruits and vegetables. Half of the plate. So one dosa, 1/4 of dosa, and then half of the plate must be fruits and vegetables. Do you do that? आप जब भी उन्हें खिलाएंगे आप देखेंगे कि अगर हमारा 1/4 हिस्से में अगर हमने इडली डोसा या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट रखा है तो हमारी आधी प्लेट में उनके पास में फल और सब्जियां भी उस आधी प्लेट में होनी चाहिए. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Okay, if you are later I will let you know if let's say you are not doing all this well, then you should think of supplements that can help your children to replace, okay, some sort like to supplement the deficiency here. So the last one, okay, the last two is the protein and dairy. So that protein like beans have 1/4. It can be beans. If you are a vegetarian or non-vegetarian, you can choose egg or fish or chicken. White meat preferably is white meat. So as your protein sources. अगर प्लेट की बात करेंगे, अगर हमें आगे चल के ये भी देखना होगा कि क्या वो ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों की जो आधी थाली है जिसमें हमें फल और सब्जियां रखनी चाहिए थी और उसमें अगर वो नहीं खाते हैं तो किस तरह का सप्लीमेंट लेने से हम ये कमियों को दूर कर सकते हैं. और अगर प्रोटीन की बात करें तो अगर हम वेजिटेरियंस तो हम बीन्स वगैरह दाल वगैरह ये सब ऐड करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो उसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियनों के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका अंडा मछली चिकन इस तरह की सारी चीजें उसमें मौजूद है होनी चाहिए. Yeah, the dairy, it can be cow milk, or if you are having the lactose intolerance, you can choose soy milk as well. So as your dairy intake. So this is also very particularly important for your especially breakfast. और ब्रेकफास्ट में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को गाय का दूध जरूर पिलाएं. अगर गाय का दूध में अगर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हम सोया का दूध भी उन्हें पिला सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप नाश्ता कराते हैं नाश्ते के वक्त में 1 गिलास दूध देना बहुत जरूरी. Okay, so this is one of the example as one of the meal where you comprise fruits and vegetable, protein, and only where the dairy is not included here. Okay, so you should you should start sharing what a good nutrition looks like to your children. So then your children will start taking care of themselves whenever they want to eat. They know what to choose based on your needs. आप यहाँ पे एग्जांपल पे देखेंगे कि एक थाली का, मैम कैन यू प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड. Okay. या थैंक यू. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इस तरह की थाली का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फल भी है, सब्जियां भी हैं, प्रोटीन भी है. यहाँ पे सिर्फ इसमें अभी 1 गिलास दूध की यहाँ पे कमी रह गई है. और इसके साथ साथ में हम अपने बच्चों को एडुकेट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि कैसे उनके शरीर के अंदर में न्यूट्रिशन जो है अच्छी मदद करेगा उनको अच्छी लाइफ जीने के लिए, ताकि वो भी अपने शरीर के प्रति खुद जागरूक होना शुरू हो जाए. Okay. Yeah, finish, man. Okay, all right. Okay, so, well, I believe not the parents, now you know what are the food that your children need, what is a good nutrition mean to your children. So, but all the parents are very busy, right? You can't always like make sure your children is taking all the food, or you also might not have the time to prepare the food for them. So what you can do that अब जब हम लोग जान गए हैं कि हमारे बच्चों में किस तरह के खाने की हमें जरूरत है और किस तरह का खाना उन्हें देना चाहिए, लेकिन आज हम अपनी व्यस्तता के चलते आज आप देखेंगे कि हर माँ बाप किसी न किसी काम में बिजी हैं, तो हर वक्त बच्चों के खाने के ऊपर में उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं. तो आइए अब जानते हैं कि किस तरह के सप्लीमेंट. Yeah, you can. Okay, can I continue?
Hello, Hansraj. Proceed. Yeah, Okay. yeah, ma'am. Okay, all right. So now the supplement where you can start letting your children to take is a supplement which is high protein and high calcium, especially if your kids is not growing healthily. And so this drink that I'm going to introduce you is a soy drink. ओके अब जिस ड्रिंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिस सप्लीमेंट्री फूड के बारे में बात करेंगे, आपके अगर अपने बच्चों के अंदर में कैल्शियम की कमी है या उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके बारे में हमें सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। और अभी हम लोग इस सोया ड्रिंक के बारे में बात करेंगे। And especially if your children is teen or having this anemia problem, so I'm going to share you this supplement which is not only made from soy drink, high in protein, high in calcium, but also high in folic acid, that can help your children to focus in their study with this folic acid for your brain health as well. Okay. अगर हमारे बच्चों के अंदर में अगर हमारा बच्चा बहुत दुबला पतला है या उसके अंदर अनीमिया की कमी है, तो अगर अनीमिया है और अगर तो आज हम लोग जिसका बात करेंगे तो ये जिस प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और इसमें न सिर्फ कैल्शियम की मात्रा अच्छी है बल्कि अच्छा फॉलिक एसिड भी इसके अंदर मौजूद है। Yeah, this is called KCal Plus. Okay, so KCal Plus is the supplement that you can start giving your children to take as their breakfast, one dairy. So this one will be a good choice for your children. So पेश किस्मत है आपके सामने KCal Plus। ये KCal Plus एक बहुत ही अच्छा डेयरी फूड का सप्लीमेंट बन करके आपके सामने आएगा। Yeah, soy based. So what you can do is like for children who are above 10 years old, then you can suggest them take one sachet of this KCal Plus, one glass every morning. But for those who are below 10 years old, then half sachet will do already. तो हमारे घर के बच्चे अगर 10 साल से ऊपर उनकी उम्र है तो उन्हें एक सेशेट आप रोजाना देना शुरू कीजिए, और 10 साल से अगर उनकी उम्र कम है तो आप हाफ सेशेट उन्हें देना शुरू कीजिए। Yeah, because one sachet contain 1,200 milligram of calcium, where children above 10 years, or particularly 12 years and above, they need about 1,200 milligram of calcium. But for those who are below, so 700, 800 milligram of calcium they need. So that's why, so the dosage will be different according to your age group. क्योंकि हमारे केल प्लस के एक सेशेट में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक एडल्ट यानी 13-14 साल के ऊपर के लड़के को एक हमें रोजाना 1200 mg कैल्शियम चाहिए, लेकिन बच्चों में ये 10 साल के कम उम्र वालों के बच्चों में ये 700 से 800 mg चाहिए होता है। सो ये डोजेस अलग अलग होंगे, लेकिन उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। Okay, so it will be best if you can drink with your children together. So you yourself also be the role model. Always remember, whatever you are enjoying, then only your children will enjoy eventually. So आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना है। जिस चीज को हम एंजॉय करना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे भी उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। Yes, okay, so yeah, it is made from skim milk powder and soybean, has a high folic acid, and it is skim milk, which means if your children is overweight, so for those like from Gujarat or Goa, like the statistics show, so this milk is skim milk where it is not full cream milk, so your children will be very fine also drinking this every day. So it's very nutritious but not fatty. आप देखेंगे कि KCal Plus जो है उसके अंदर कैल्शियम पाउडर है, वो स्किम मिल्क पाउडर से बना है। उसके अंदर सोयाबीन का पाउडर भी है, उसके अंदर इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी है। जैसा कि हमने पहले स्टडी में देखा कि गोवा और गुजरात के बच्चे जिस तरह से ओवरवेट हैं, ये एक तरह का फुल क्रीम प्रोडक्ट नहीं है। ये जब आप देना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे एनर्जेटिक होंगे, और आप घबराइए मत, इसके अंदर किसी भी तरह का फैट मौजूद नहीं। Yeah, okay, so low fat, low sugar. So yeah, let's make sure this is first thing first. Every morning breakfast, start prepare for every family member, parents, kids, all drink KCal. So आप अपने सुबह के नाश्ते में, चाहे हम लोग बड़े हैं या हम छोटे हैं, हमारे बच्चों के लिए सबके नाश्ते में ये KCal Plus को आप जरूर ऐड करिए। Okay, so when talk about children nutrition, usually we also think of one of the challenges that most of the children will face, which is exam. So the children usually they will feel very stressful, or they can't sleep well, or what. So how, as a parents,
how can we support our children to take the exam with more confidently and with less stress? So there is one supplement that can reduce the stress for your children. There is one supplement. बच्चों में तनाव का एक सबसे मुख्य कारण है जो आज स्कूलों में जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के चलते बच्चों के शरीर के अंदर में बहुत ज्यादा तनाव पैदा होने लगता है। तो एकमात्र ये सप्लीमेंट है जिसको लेने से आप बच्चों के अंदर तनाव कम कर सकते हैं और अपने शरीर के अंदर भी आप तनाव मुक्त कर सकते हैं। Yeah, that is called KMM. Okay, KMM can help to reduce the stress while children who take the KMM, they can focus in their study. So which means your children can do better in school. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KMM एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे बच्चों में तनाव की कमी को कम करेगा और उसके साथ साथ में उनके कंसंट्रेशन पावर को भी ये बढ़ाएगा। Yeah, so as you can see, the KMM, there are two main ingredients which is highly well researched that can improve the brain function. So your child, as I show you just now, the brain of the child is comprises 1/5 of the total body. So it's in fact consume a lot of energy, need a lot of all these powerful antioxidants to keep function. So yeah, that's why I need some specific herbs that help to take care of the brain as well. KMM के अंदर में जिन हर्बों का इस्तेमाल किया गया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गोटू कोला। अगर इसके बारे में बात करें, जो रिसर्च अभी हमने आपको दिखाई कि हमारे बच्चे के दिमाग में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी जरूरत होती है। सो गोटू कोला एक बहुत अच्छा इसमें हर्ब्स है KMM के अंदर। Yeah, Gontu Kola, and then some research which since time is not allowed, so I will just quickly glance through this. And this is also one of the herbs that is in KMM. So all these very precious herbs that can improve the brain function especially. KMM के अंदर में एक और महत्वपूर्ण जो जड़ी बूटी है उसका नाम है शंखपुष्पी। तो हम लोग बहुत सारे लोग शंखपुष्पी के बारे में जानते हैं कि दिमाग के विकास करने के लिए शंखपुष्पी का एक महत्वपूर्ण योगदान। So I would suggest all the parents after the breakfast you can give your children to take 2 capsules of KMM every day, every morning as well. Make it a habit. So to make sure your children has the best condition to before they go to school. तो मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी तमाम हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को नाश्ते के बाद में 2 KMM की गोलियां जरूर आप खिलाएं, जिनसे उनका स्कूल का कैरियर और कॉलेज का कैरियर, उनकी जिंदगी और बेहतर बन सके। Okay, so I'm sorry. Okay, and then next is okay. This is the ingredient of KMM. Next is the last one, last supplement that I recommend to the parents in India is spirulina. Why I recommend this is just now, if you remember the statistic, it shows that a lot of boys in India, a lot of boys are 10 to 19 years old boy, they lack of vitamin B12, which means they need vitamin B12. Otherwise, they will their energy level will be lower. They can't really focus in their study, and it's overall health, it will be affected. So vitamin B12 particularly is having this common deficiency problem among boys, and especially the vegetarian. And vegetarian, lacking of vitamin B12, so they are prone to have the anemia problem or sleepy or tired problem. आज के जिस आखिरी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे, वो है हमारा स्पारुलिना। जैसा कि हमने रिसर्च के अंदर में देखा था कि भारत में बच्चों के, स्पेशली लड़कों के अंदर में विटामिन B12 की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 एक अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए, लेकिन वो हमारे शरीर में कमी रह जाने की वजह से नहीं हो पाता है। तो स्पारुलिना उन सब के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली जो हमारे यहाँ देश में शाकाहारी जितने लोग हैं उन लोगों के लिए स्पारुलिना एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री फूड है। Yeah, so I would highly suggest all the vegetarian and also all the boys, and or if your girls is having anemia problem, please add spirulina.
in their daily diet. You can take the spirulina after school, after once back from school. Then you can drink 1 glass of spirulina. It can replenish all the red blood cells. So yeah, it will be a very good health drinks for your children. तो मैं यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे लड़के मौजूद हैं या लड़कियां मौजूद हैं, मैं उन सबको, जितने गार्जियन है, सबको ये रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड करना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर में, जिनके लड़कों में जैसे विटामिन B12 की, लड़कियों में एनीमिया की कमी है, आप उनको क्या करें, स्कूल से आने के बाद में उन्हें एक गिलास में 1 सेशेट मिला करके आप उन्हें दीजिए, जिससे उनके शरीर की थकान दूर होगी, उनके जितना भी मसल्स ग्रुप के जो ब्रेकडाउन हुए होंगे वो मजबूती से बनना शुरू हो जाएंगे. Okay, so all right. So that's all. This is the 3 supplements that I will highly recommend to all the parents in India. Starting. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट्री फूड्स हैं, जो मैं हाईली रिकमेंडेड करती हूँ इंडिया में स्पेशली रहने वाले सारे गार्जियनों के लिए, कि अपने बच्चों को आप ये देना शुरू करें. Ms. Lian, there is one question from the participant asking how to drink K+. Should add in milk or without milk? Okay, Mr. Jega. All right. So I saw this. I was about to answer as well. Okay. Hi, Bikash Mondal. Right. Okay. Cacao take with milk or without milk? Okay. I would suggest cacao take without milk because it itself is a soy milk. The Cacao Plus itself is already a soy milk where it has high calcium content. So it is not necessary to add with milk. So this यहाँ पे विकास मंडल ने एक बहुत बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछा है कि क्या K-Cal प्लस को हम दूध के साथ लें या बिना दूध के साथ में लें. तो मिस बिलियन ये बताना चाह रही हैं कि K-Cal प्लस जो है वो आप मिल्क के बिना ही लीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोया मिल्क जो है वो इसमें ऐड किया हुआ है. सो इसमें इसको दूध के साथ में लेने की आपको कोई जरूरत नहीं. But if let's say if you just want to if you prefer to have more different variety of the taste, if you want to add milk, that is not a problem, But I just feel that is not necessary to add with milk already lah. But if you want to just enjoy the taste of it together with milk, there is no harm. Just अगर हम दूध के साथ में इसका सेवन करना चाहते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप दूध के साथ में ही इसका सेवन करें. Okay, so I hope it helps to answer your questions here. And okay, so that's all for my sharing of today. I hope everyone get the quick tips for children nutrition for your kids. So and then I hope to see you again. I guess we will see each other again very soon. Okay, thank you. Okay, terima kasih ma'am, terima kasih. Sama-sama. Thank you very much ma'am for being with us and sharing all this kind of very important message, very important informations for the especially for the guardians who wants to grow their children in a healthy way. So thank you very much for being with us, and hope we will get your support in the soon and after all. My pleasure. Okay, take care everyone. Bye. All the parents, good luck to you. Bye.